Well, hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. We saw quite a clash here at the DY Patil Stadium. Not the way we were expecting the pitch to be, but we have got a result. It was Lucknow versus Bangalore, and Bangalore has won the match with 18 runs. Gentlemen, your thoughts on this, and also here is the match summary. Let's take थैंक a यू look. करिश्मा जी। हाँ, देखिए जी हाँ। लखनऊ ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वो काम असरदार हुआ भी। 2 विकेटें चली गई थी 7 रन पे। फिर कप्तान फैफ डू प्लेसी संभल के बैटिंग करते रहे। 11वें ओवर के बाद उन्होंने गियर बदला और 96 रन बनाए 64 गेंदों में। आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। शाहबाज के साथ 69 रनों की साझेदारी थी, 26 रन शाहबाज ने बनाए और यही फर्क था। ग्लेन मैक्सवेल के वो 23 रन जरूर आए, वो उसके चलते एक वो सम्मानजनक स्कोरबोर्ड में लगा 181 इस विकेट के ऊपर। बहुत बढ़िया वो एक स्कोर था। दुष्मंता चमीरा ने 2 विकेट निकाली, वो दोनों ही पहले ही ओवर में आई थी। विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हुए थे और साथ में अनुज रावत भी वो पहले ओवर में आउट हुए थे। 2 विकेट जेसन होल्डर के खाते में, लेकिन 181 को डिफेंड करने के लिए जॉश हेजलवुड की इस पिच के ऊपर वो 4 विकेट, क्योंकि इस पिच पे वो अतिरिक्त उछाल था। हर्षल पटेल विकेट्स में दोबारा दिखे। 181 इस विकेट पे आप डिफेंड कर रहे हैं, वो स्लोअर बॉल्स फिर से वो असरदार साबित हुई। ग्लेन मैक्सवेल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था वहां पे फैफ डू प्लेसी ने। 1 विकेट उन्होंने चटकाई। जस्ट गोस टू शो हाउ यू बीन एबल टू रोटेट योर बॉलर्स एंड ऑन अ डिफिकल्ट पिच ऑल्सो। सिर्फ संभल के पेशेंटली बैटिंग करते रहे फैफ, इंतजार करते रहे कि कौन सा बॉलर उनके पाले में गेंद डालेगा एंड वो बड़ी हिट मारने को देखेंगे। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने सोचा होगा ये पिच जो है ना वो 200 वाली नहीं है। अगर 165 170 में बना लूंगा सो मेरे बॉलर्स के पास एक टारगेट होगा डिफेंड करने के लिए। दैट्स व्हाई ही डिडंट गो आफ्टर द बॉलिंग स्ट्रेट अवे इवन व्हेन द विकेट्स वर फॉलिंग। ही वाज पेशेंट एंड वो एक ओवर चेंज्ड एवरीथिंग। 181 इस विकेट के ऊपर वाज अ गुड स्कोर। Absolutely. और आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे ही दिया है, but because we had to talk about Flav, the थैलेपति। Lone Ranger. कोई बात नहीं, it's amazing. Wasim, let's start from the first innings. We have seen the Lone Ranger wanting to fight it all out the very end, but missed the century by 4 runs. Have we got Faf du Plessis in form again? जैसे निखिल ने अभी बताया है Flav के बारे में and how well he performed. Let's ask you about this as well. Have we got him back in form again? आई थिंक स्पेंट जैसे निखिल ने बताया है ना कि 10 ऑलमोस्ट 9-10 ओवर तक ही वाज प्लेइंग रन अ बॉल। करिश्मा तो कोई बहुत बड़े शॉट्स नहीं लगाए। ही स्पेंड द टाइम इन द मिडिल। पिच इतना इजी नहीं था जितना हम समझ रहे थे। पिच में थोड़ा सा स्पिन था, थोड़ा फंस कर आ रहा था बॉल। बट आई थिंक वो जो इनिशियल 20-25 गेंदें उन्होंने खेली, दैट वाज द की। और वही उनकी इनिंग वाज द गेम चेंजिंग वन। समबडी गेटिंग 96 आउट ऑफ 181, सो आपने आधे से ज्यादा रन अकेले बनाए हैं। तो दैट वाज द मोमेंट। और जैसे हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली या फैफ डू प्लेसी, मैक्सवेल, डीके, इनको स्टेप अप करना होगा। एंड वी हैव सीन इट टुडे। द कैप्टन टुक इट अपॉन हिमसेल्फ, बैटेड मोस्ट ऑफ द इनिंग्स एंड दैट स्कोर ऑफ 181 जो हमने प्रीव्यू में भी बात किया था कि अगर 180 या उसके ऊपर बनाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीमें पहले बैटिंग करके भी जीती है। सो दैट वाज वेरी की। And then to come back and bowl like that, जैसे जॉश हेजलवुड ने bowling की, and I think the most key thing was getting that 6 overs out of the way from Glenn Maxwell, उनके 2 ओवर और 4 ओवर शाहबाज अहमद के। I mean combined उन्होंने 6 ओवर में 36 रन दिए and picked up a wicket. I think that was the key. उनके 6 ओवर निकल जाने की वजह से you got Josh Hazelwood and Harshal Patel bowling in the depth. अगर वो नहीं डालते तो you would have got somebody else to bowl in the depth. That could have been game changing. So I think very well led by Faf du Plessis, batted brilliantly, and I think he captained also really well. And that 19th over changed the game completely. That wicket of Stoinis, 2 wickets in that over. Stoinis ka wicket just killed it for Lucknow. Absolutely. चलो हम बात करते हैं निखिल about रवि बिश्नोई. आज उनका दिन शायद अच्छा नहीं था because he had even a worse drop catch. We have seen a lot of drop catches in this IPL, right? जी देखिए, दुर्भाग्य है, part and parcel of the game. You've got some spectacular catches being taken and some catches getting dropped as well. That's, I guess, part and parcel of the game. But the
बैट्समैन केम विद अ प्लान बैटिंग अगेंस्ट हिम, और अंत में वो एक ओवर शायद बचा के रखा भी था जब दिनेश कार्तिक के लिए, बट एक भी बॉल उनको डालने को मिली नहीं, उनके लिए लेके भी आए थे। वो जितनी बारी बॉल आउटफील्ड में गई वो एक को दो में तब्दील कर रहे थे, तो हर बारी वो वहां पे फैफ ही स्ट्राइक पे रह रहे थे। सो आई गेस दैट डिडंट वर्क, बट दैट हैपेंस। जिस तरीके से आज बैंगलोर के लिए भी हसरंगा ने सिर्फ 2 ओवर डाले, जहां पे एक समय पे वो भी पर्पल कैप की रेस में थे, विकेट चटका रहे थे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। तो जैसे अभी वसीम ने कहा कि शाबाज के वो ओवर्स और ग्लेन मैक्सवेल के 2 ओवर, 6 ओवर आपने निकाल दिए, ऊपर से नया बॉल से विकेट्स मिल गया, तो आपको हसरंगा को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपका एक स्ट्राइक बॉलर गेंदबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो आई गेस यू कीप प्लानिंग फॉर दैट, एंड सबको पता है रवि बिश्नोई के अगेंस्ट जब आप बैटिंग करने को देख रहे हैं करिश्मा, एक ही सोच कि बाहर की तरफ राइट हैंडर को टर्न नहीं करेगा, वो मैक्सिमम थोड़ा सा सीधा रह जाएगा। वो सिर्फ गूगली डालते हैं, सम परसेंटेजेस आई थिंक Yeah. 78% सिर्फ गूगली डालने को देखते हैं, तो आप उनको अंदर वाली गेंद के लिए ही तैयार रहे, तो इसीलिए शायद बेहतर प्लानिंग करके आए। फॉर रवि बिश्नोई टू बी अ बेटर बॉलर, मैं हमेशा मानता हूं जब सामने वाली टीम को पता चल गया है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सो यू नीड टू प्रिपेयर एज इफ दे ऑपोजिशन नोज एवरी सिंगल ट्रिक दैट यू हैव, ट्राई एंड डेवलप Yeah. समथिंग न्यू, सरप्राइज एलिमेंट वो जरूरी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, actually that does make sense. चलो हम बात करते हैं वसीम about Dinesh Karthik. Do you think he is the answer to a finisher's place in the Indian team? Again, he looked like he was, he a phenomenal touch. However, though he only got a few deliveries, again he looked very very deadly. I mean, Zahir si baat hai, is a great cricketer, but let's talk about, is he the answer to a finisher's place in the Indian team? डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि उनका नाम डेफिनेटली होगा, सिलेक्टर्स के थॉट्स में होगा। और जिस तरह से बैटिंग करे, आई मीन इफ ही हैज अ ग्रेट आईपीएल ऑलरेडी, ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली, आई थिंक ही इज ऑलरेडी, उनका नाम चल रहा होगा। बट इफ ही गोज ऑन एंड प्लेज अनदर फ्यू ब्लाइंडर्स, मुझे लगता है कि उनका नाम रूल आउट नहीं करना चाहिए। समबडी टू बैट एट नंबर 6 और नंबर 7 फॉर इंडिया, द वर्ल्ड कप इज कमिंग ऑन, समबडी हुज गॉट ह्यूज एक्सपीरियंस, आई वोंट रूल हिम आउट। मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो स्क्वाड में तो उनकी जगह बनती है। एंड विथ हार्दिक पांड्या ऑल्सो देयर, वेंकटेश अय्यर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, सो अगेन somebody like Dinesh Karthik who's eager and very keen to get into that Indian team. Sometimes जब आप इतना motivated होते हो, आप इतनी मेहनत किए होते हो, to get somebody like that in the team, I think makes sense. तो मुझे लगता है कि definitely उनका नाम होना चाहिए। Okay, fair enough. आपको क्या लगता है बैंगलोर को, do they need to rethink a batting order as they were 4 wickets down, yet their best striker Dinesh Karthik gets to play only 8 balls? Nikhil, आपको क्या लगता है? आई गेस देखिए हम लोग सब बात भी कर रहे थे करिश्मा अनुज रावत के बारे में, ही इज गॉट दैट 150 टू हिज नेम, बट उसके बाद जिस तरीके से आउट हो रहा है, आई नो दिस किड व्हेन ही वाज व्हाट मे बी 17 इयर्स ओल्ड, मैंने इनके साथ थोड़ा सा काम भी किया है इंडिया अंडर 19 में जब वो थे, तो आई वाज कोचिंग देम एज वेल, सो आई हैव सीन हिम ग्रो अप। आई थिंक पर्सनली ही इज ट्राइंग टू हिट द बॉल रियली हार्ड, एंड he's somebody who always looks to time the cricket ball. आप उनको देख, he's always in a rush, वो jab करते हुए नजर आ रहे हैं। It's like he's looking to control the result, not just think about the process. You look at some of the other great strikers of the cricket ball, even Faf du Plessis, there's that calmness about him, that ठीक है यार 3 बॉलें अगर एक बॉलर ने अच्छी डाल भी दी, I will give respect, क्योंकि ये पिच जो है उस तरीके की नहीं थी। You as a batsman need to identify and plan कि यार ये पिच कैसी है, मैं 3 4 5 बॉलें देख तो लूं। इवन इन द साइड यू हैव अ रोल saying that okay, you're going to be the aggressor in the power play and Faf will probably look to play the sheet anchorman। उसके बावजूद आप 4 5 गेंदे लेके देखे तो सही कि हर विकेट जो है वो 200 वाला विकेट नहीं होता। हर विकेट आप सिर्फ, यू कांट जस्ट पिक द लाइन ऑफ द बॉल एंड लुक टू हिट थ्रू, और हर बॉल आपको हवा में मारने की जरूरत नहीं है। हवा में मारेंगे 1 बाउंस चौका, 2 बाउंस चौका, वो भी 4 ही रन मिलेंगे। आप नीचे भी मारेंगे 4 रन, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल बैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू गॉट अ क्लासिक एग्जांपल, आपका कैप्टन ने जिस तरीके से आपकी इनिंग्स को बिल्ड की है, उससे सीखें, दिमाग की बत्ती जला के रखें, सीखें कुछ। सो आई probably give him a call as well, make no mistake about it, and just tell him what's happening with the young kid. I like this, दिमाग की बत्ती जला के सीखे कुछ. Okay.
सीखना चाहते हैं? Do Bangalore need to bring Rajat and Mahipal back into the game? Lobror. Mahipal Lobror, Karishma, he bats in the middle order. So I don't see many changes in that middle order. I think you will still give Suyesh Prabhudesai a couple of games. I think he's done all right. He's not done anything bad. But maybe Anuj Rawat ki jagah pe, I don't know if anybody can bat top of the order, it will be Rajat Patidar, who can at least open. He bats at number 3 in domestic cricket, so he can definitely go and open. He is a very good striker of the ball, so that is one possibility. But जब आप जीत रहे हो, Karishma, then you don't want to make too many changes. That is the liberty somebody have when the team is winning. They get extra chances. तो शायद अनुज रावत को भी extra chance मिल सकता है, सुरेश प्रभु देसाई को भी chance मिल सकता है. So I would like them to continue कि जब तक आप बिल्कुल खराब performance नहीं कर रहे हो, जब तक आप जीतते जा रहे हो, why make a change? Yeah, if it's not broken, why fix it? अच्छा, एक दूसरा सवाल जो काफी important है. Do you think Virat is getting too edgy too quickly? Don't you think he should take his time and be patient like Duplessis did today? Yeah, मैं हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ आपको. No, we want you to go on. बहुत whatever. जल्दबाजी कर रहे हैं. जल्दबाजी कर रहे हैं. Wasim, go for it. I think obviously जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, करिश्मा, जैसे हमने प्रीव्यू में भी बात किया, lot of times you play the ball, you middle the ball, but वो फील्डर्स के पास चला जाता है. जैसे उनके रनआउट्स हुए कि एक स्टंप पे एम कर रहे हो और वो डायरेक्ट हिट लग रही है, ही इज मिसिंग आउट बाय 1 इंचेस. वो एलबीडब्ल्यू जो दिया गया उनको बैट पे लगा और देन द थर्ड अंपायर मेड अ मिस्टेक. So he's going through that patch where everything is not working. मार भी रहे हैं तो बॉल हाथ में जा रही है. Anything that he's doing is getting out. So I think he just needs to spend a bit more time. I think हम लोग बहुत बात करते हैं इसके बारे में. Just feel for the guy. I mean somebody like Virat Kohli, जो इससे पहले for fun run बनाते थे. I mean inning after inning he used to make runs for fun. How much he must be feeling कि इतना कोशिश कर रहे हैं, and the way he trains, जैसे हमने बात की, he trains with a lot of intensity in every practice session, and for him to go through that for such an extended period, how hard it must be. So I just feel that थोड़ा rub of the green होना पड़ेगा, थोड़ा सा he needs to spend a bit more time. I think if he plays 20 balls, even for 20 runs, I think it's not a bad thing. Something which Fab du Plessis did. At 20-25 ball में he was batting run a ball. So if Virat Kohli does that, he spends a bit more time in the middle, I think things will start to change for him. Yeah, absolutely. करिश्मा, और साथ में 2017 के बाद विराट कोहली पहली गेंद पे आउट हुए, मतलब लाइक वन ऑफ दोस गोल्डन डक काइंड ऑफ थिंग्स. एंड बतौर बैट्समैन यू आर रिएक्टिंग टू अ मूविंग बॉल. जिस तरीके से वो बाउंस था, यू सी इट वाज वेल विद इन यू एंड यू आर लुकिंग टू play that ball. That's the most he can do. Had he spent about 6, 7, 8 deliveries, he would have got used to the pace and bounce of the wicket. But to get a first bowler, I guess, he really couldn't do too much about it. Yeah, makes sense. I mean, hum chahte ki even our viewers give us some comments and answers. So we want to know your opinions, what Wasim and Nikhil are saying, and do you agree with it? And any questions that you have, remember hashtag not just cricket. Gentlemen, again, we've seen Manish Pandey struggling in this IPL. So don't you think he hasn't made, I mean, it's hard to say, has he made justice to his talent? Of course, he's a talented person, but something is amiss. Though he was the first Indian to score 100 in the IPL. So let's talk about Manish Pandey. Wasim, I think you can start, and फिर निखिल, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना opinion दीजिए. Yeah, I think कुछ सालों से करिश्मा he is not at his best. I mean even SRH में भी खेल रहे थे. SRH bought him for a very big money. But वो जो consistency होती है जब वहाँ पे आप सीजन में 500-600 रन बनाते हो, I think इतना सुनने में आता है कि he likes to bat at number 3. If you move him around at number 4 or 5, he doesn't like it. I don't know how true is that. But here he is getting an extended opportunity. 3 number पे ही batting कर रहे, he is getting that chances. But he is not converting those starts. Somebody who's played at the top level, वो fluency नहीं दिखाई दे रही है करिश्मा. तो I don't know. Gautam Gambhir likes him because he was part of that KKR team which won 2 championships, 2 IPL. They bought him in the auction. They've given him the chance at number 3.
He's a very good cricketer. There's no doubt about it. Somebody who's got runs in big games. But I think he need to turn it on क्योंकि वो इतने अच्छे player हैं. He's probably losing out on time, I would say. Otherwise, they'll have to force somebody and see कि कौन वो number पे batting कर सकता है, because KL Rahul और Quinton de Kock, they are obviously giving them a good start. But वो number 3 जो T20 में हम बात करते हैं करिश्मा कि the top 4 needs to bat maximum overs. But if your number 3 and number 4 Yeah. doesn't do that, then it puts a lot of pressure on your lower mid order. So I think he needs to come to the party pretty soon. So मेरे लिए scary, no? Like, I mean, no, Nikhil, सॉरी please. करिश्मा, मेरे लिए देखिए मनीष पांडे नीड्स टू रियलाइज कि मेरे रन कहाँ से आ रहे हैं, मेरे कौन से बॉलर्स हैं जिनको मैं टारगेट करने को देखूंगा। और जब मैं बोलता हूँ बॉलर्स को टारगेट करने का मतलब है कि वो डॉट बॉल ना जाया करें, क्योंकि डॉट बॉल का मतलब है कि एज अ बैट्समैन उनको वो प्रेशर आता है। वो अब मनीष पांडे 20 रन बनाए या 50 रन बनाए, ऐसा लगता है कि अब आउट हुए। So he needs to really look to try and control the game a little bit more as well. कि विकेट का पे आप बैटिंग कर रहे हैं, विकेट का पेस को आपने गेज किया, उछाल का, am I going to be looking to play square at the wickets? जैसे आज विकेट था कि you knew as a batsman that because of that extra bit of bounce, none of the bowlers are going to look to pitch it up in your half. That's going to be the slot delivery, and you're going to go after them. So एज अ बैट्समैन समवेयर और द अदर यू प्लान कि आज जैसा विकेट आया थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाने को देखना पड़ेगा, अंटिल अनलेस कोई यॉर्कर ट्राई करता है और उस स्लॉट में गेंद मिलती है तब मैं सीधा मारने को देखूंगा। सो यू गेज द पेस एंड बाउंस ऑफ द विकेट बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी like you said talented cricketer and also an experienced campaigner, but it's about time you started using that experience. You've been through these ups and downs, but how do you get out of it? You're your best judge. Yeah, absolutely. He is his best judge. Let's talk about someone who is actually doing a decent job. Krunal Pandya, the man who was used to do the job for Mumbai, is now certainly doing it for Lucknow. Uska performance काफी अच्छा था आज. And Wasim, if you would like to take us through his performance today. No, I think it makes sense to use him at the top of the order. I think जो नंबर पे आज उनको खिलाया probably suits him. He gives that option of right hand left hand combination if Quinton de Kock gets out. So I think he used that opportunity really well. Somebody who batted 150 strike rate, he would have liked to probably play another 3-4 overs. शायद गेम और क्लोज आ जाता, but I think he did job really well. मुंबई इंडियंस के लिए भी वो कभी कभी ये काम करते थे. They used to send him at number 3, number 4, कभी कभी जब विकेट गिरता था. तो I think it makes sense कि गौतम को इससे पहले भेजा या होल्डर को भेजा. I think it makes sense to use Krunal Pandya, or I would say even Ayush Badoni, somebody who's so talented. He looks technically very good, plays very big shots really well. छोटे कद के हैं, but he packs a big punch. So I would also probably encourage Ayush Badoni to be promoted because he looks a very good player. Yeah, I mean, we're going to go to the social tracker in the next minute. One quick question before I throw to the social tracker. KL Rahul looks quite excited when he plays against Bangalore. We have seen him doing it in every match, though he hasn't scored big. What's in between Rahul and Bangalore? हम जानते कि वो Bangalore से तो है ही, लेकिन I mean, it must be a little, I don't know. I mean, if I had to play against London, I would feel a little bit, but a game is a game and you have to play it wise. So, how do you think he must be feeling? कुछ टीमें होती हैं जिनके खिलाफ आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहता है, या कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि आप यू ट्राई दैट एक्स्ट्रा लिटिल बिट कि यार आज मैंने ना रन बनाने। जिस तरीके से जो सेटअप है, जो आंकड़े हैं, बहुत सारे वो आंकड़े फेवर इसलिए करते होंगे क्योंकि आप जब चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं, बेंगलोर के मैदान में खेले हैं, आपने बचपन से उस विकेट के ऊपर बैटिंग की है, आपको पता है कि क्या वो घास किस तरीके से महकती है, किस तरीके से बॉल बैट पे आएगी। सो बेंगलोर के स्टेडियम में खेल रहे हैं तो खूब सारे रन बनाए, एंड समवेयर यू टेंड टू डू वेल अगेंस्ट दैट साइड इज वेल। एंड टू मी, मैं तो बड़ा हैरान था कि उनको किसी ने पूछा या नहीं पूछा। मुझे तो लग रहा था इस साल वो बेंगलोर के कप्तान होंगे, जितने मर्जी पैसे मांगते मैं तो उनको दे देता, बिकॉज आपकी वो फैन की वो लॉयल्टी, आपका फैन बेस और बढ़ता। कैन यू इमेजिन केएल राहुल जो आने वाले समय में, आज नहीं, उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये एक ऐसे शख्सियत है कि शायद भारत के कप्तान भी बन सकते हैं। तो आप मतलब अगले 5 साल 7 साल अपने सिक्योर कर रहे हैं,
वो फैन बेस, वो लॉयल्टी बनाने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, लाइक वी डिस्कस, इट्स जस्ट नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो बिजनेस एज अ फ्रेंचाइज. तो आप उस मद्दे नजर से भी सोचिए, आप अपने एक लोकल लड़के को आप कप्तान बनाने को देख रहे हैं. बिल्कुल, एक्चुअली मुझे भी ये शायद लगा होगा that they would have, but maybe next year, in the next few years, let's see. चलो देखते हैं. सोशल ट्रैकर powered by sky247.net और सोशल दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं. Let's take a look. Let's take a look at the first tweet over here. Wasim, Jaffer, from you. Why don't you read this out yourself? Well, जो हमने बात की करिश्मा के, first 20 balls में he scored 21, then 40 balls में he was 50, and then in the next 24 balls, he put the fifth gear on and then took the score to 96. So that's the pace, जो हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली maybe can do that, spend 18-20 balls at the crease, and then things will change. He automatically, the moment he get that feel and rhythm, he'll automatically bat in that gear. So that's exactly what it. Outstanding knock. I think Bangalore could win. Firstly, because Faf du Plessis, put up that score of 181 and he's 96, and that the bowlers obviously, complimented. So fantastic knock from the captain. Indeed. Thanks for that tweet. Let's take a look at our next tweet. Here we go. Captain standing up when the team needs him and leading from the front. Cricketer defined by character. Let's go Faf du Plessis. What a splendid knock this has been. Interesting indeed. Do we have another tweet? I don't think we have another tweet. So I think that is that. So now that was the social tracker, and thank you for that. Going as per your expectations, Wasim and Nikhil, let's take a look. There we go. पॉइंट्स टेबल अब देखिए, गुजरात अभी भी बिल्कुल टॉप पे है. बैंगलोर फिर अपनी जगह बनाती हुई 10 अंक के साथ, और नेट रन रेट उनका बेहतर है. राजस्थान भी मौजूद है. लखनऊ कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि यार आज जिस तरीके से 2 विकेट निकालने के बाद आज चांस था, लेकिन 2 अंक चुरा के ले गए बैंगलोर की टीम. अब कल मजा आएगा. कल रहेगा दिल्ली का मुकाबला, और साथ में रहेगा कल दिल्ली और पंजाब किंग्स का मुकाबला है. Bilkul. Let's talk about tomorrow's game. It's going to be a very interesting game too. Can I call them North Indian teams? Because Punjab is quite close to Delhi. Absolutely. Yeah, that's it. That's going to be a very interesting game. Before I let you gentlemen go, a quick word about this team, this game tomorrow, please. Wasim? Well, I think अच्छा मैच होने वाला है करिश्मा. I feel both teams need a win. Punjab have lost the last game. Delhi will be without Mitchell Marsh, plus वो जो कोविड का एक स्केयर है उनके अंदर चल रहा है. So it's going to be a good game. Two very good teams matching up at Brabourne Stadium, which is a high scoring ground. So looking forward to it. मुझे लगता है कि काफी रन बनेंगे. But I'm leaning towards Punjab क्योंकि वो एक पैटर्न में खेलते आ रहे हैं करिश्मा. They win one, they lose one, they win one. So last game they have lost. So I am backing them to win this one. So let's see. And are you backing them to win this one? आपको क्या लगता है कौन सा टीम? बड़ा इंटरेस्टिंग है करिश्मा, क्योंकि ये ओरिजिनली मुकाबला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पुणे में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड स्केयर ये वेन्यू चेंज किया है, और दिल्ली की टीम जो है वो क्वारंटीन में थी. कल एक बारी फिर से आई बिलीव एक और टेस्ट होना है, उसके बाद सीधा आएगी. तो शायद उनको इतना समय पिछले 2 दिन में अभ्यास करने को भी नहीं मिला होगा वसीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा सा वो आई थिंक वो एक स्केयर भी रहता है कि कोविड हो गया है, अब किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं होगी, सडनली योर माइंड शिफ्ट फ्रॉम प्रैक्टिस टू ऑल दिस थिंग्स. तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली एक झटका तो लगा होगा. बट आई होप दे कम आउट इन द राइट साइड एंड प्ले इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये. करेक्ट. और शायद थोड़ा अभ्यास नहीं किया, मे बी रस्टीनेस क्या है. कल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा. टॉस के ऊपर एक बार फिर से कल बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है ब्रेबॉर्न का. बॉल बैट पे बड़ी अच्छी तरीके से आता है, एंड कल शायद अगर ओस होती है तो चेसिंग करने वाली टीम flip the coin, you got to back the captain that wins the toss and looks to chase maybe kal, Karishma. Well, we just want all our players to be healthy and happy and safe. That's also very important. And we will be back tomorrow. Correct. Thank you
everybody for joining us. हम कल 6:30 बजे वापस आएंगे on sky247.net presents Not Just Cricket. Jessica, हम जानते हो, we talk about cricket and everything else around it, but we are very happy for all of you guys tuning in, and thank you, gentlemen, for joining me. Good night and God bless. Thank you. Thank you and good night.